Problem क्या है This इसमें? call is now being recorded. Yes. Good. A very good afternoon to all of you. Yesterday we were discussing on regression lines, is it? So regression is a handy tool, a quite useful tool for the prediction in specifically in our big data. So uh, in last session we had already discussed about its format, what should be the formula, and what is the requirement for the regression. We had already discussed the introductory part, and today I'm gonna lead you towards that particular formula and how to apply that formula, how to predict, how to estimate uh, one of the variable if other is given, and how we will deal with that formula that we are gonna learn today. So let's start a session with that. Now first, let me keep my PPT over there. जल्दी से रिग्रेशन के ऊपर आ जाऊं मैं. Rank correlation diagram, we will discuss all that things. Yes. So this is a topic we are discussing regression, the second half of this particular unit, correlation and regression analysis. As we had already discussed, regression can be categorized, can be classified into two different ways: simple and multiple. Another is linear and linear and non-linear regression. When we can say that the regression is simple, if we are dealing with a bivariate data only, that means only two variables are provided. If more than two variables are there, then that regression will be known as a multiple. And based on the curve, if we are dealing with a first degree equation, that means if we are dealing with a straight line, then that regression will be known as a linear. And if we are dealing with, if we wish to identify one of the curve which is second degree or third degree, that means quadratic or cubic or biquadratic equation, then such regression will be known as a non-linear. So both that were the types related to the regression. ये बात हम कर चुके हैं. Then after, this was the slide we were discussing previously, lines of regression. We are supposed to deal with two different lines. One of the regression line is regression line x on y, second is regression line y on x. When we are supposed to deal with the regression line y on x, and when we will be interacting with regression line x on y, that we need to understand first of all. When we are going to estimate, when we are trying to trace a value of y under the condition that x is provided, x दिया हुआ है और y trace कर रहे हैं, y identify कर रहे हैं, then we need regression line y on x. Then we will go for regression line y on x. If y is provided and we are looking for the value of x, then regression line x on y will be there. We will be taking help from the regression line x on y. So both these are the formula. Observe here. This is the formula for the regression line y on x. Is it? This is the formula for the regression line x on y. It is very easy for you guys to remember this. This particular formula. Regression line y on x will be started with the y minus y bar equals to one of the regression coefficient into x minus x bar. The regression line x on y will have the format x minus x bar equals to one of the regression coefficient into y minus y bar. Now what is this? R standard deviation y divided by standard deviation of x, and R standard deviation of x divided by standard deviation of y. Both this will be known as a regression coefficient. Regression coefficients. Now, usually, mostly, we'll be dealing with both at first. हम पहले ट्रेस करेंगे regression coefficients, and there are lots of properties related to regression coefficient, but we are supposed to study 4 or 5 out of that. 4 या 5 प्रॉपर्टीज इसकी ऐसी है जिसके साथ डील करना बहुत ही जरूरी है, और पहले हम याद रखेंगे. So let's try to identify the let's try to collect the information related to regression coefficient. What is the regression coefficient, and what are the different properties they have? Okay, and in this particular note,
I'm talking about x bar y bar. We all are knowing that what is x bar, what is y bar. X bar y bar is nothing but just the arithmetic mean, simple arithmetic mean, or I can say averages for the x series and y series respectively. And standard deviation of x, standard deviation of y, that's sigma x, sigma y. ये दो जो है, this is nothing but the standard deviation for both the respective series. And this R is coefficient of correlation, coefficient of correlation. So once again, I will giving you the overview, but before that, let's quickly go through the properties related to regression coefficient. Now, I need, yes, this is what I need. Regression coefficient, the slope B of the line of regression y on x is also called the coefficient of regression on y on x. Similarly, the slope B for the line of regression x on y, this is also called the regression coefficient of x on y. Is it regression coefficient? And one more word I am using, that is slope. Okay, let me take you towards the 12th standard. We are having one of the points of form or the intercept form of a line. हम सभी को पता है कि what is the intercept slope form of a line, that goes something like that, y equals to mx plus c. ये हमको पता है. One of the standard format of a line. यहाँ पे क्या रहता है? What is m? What was m? किसको याद है? मेघना याद है बेटा? m क्या होता है यहाँ पे? If I'm going to represent line in this particular, with this particular formula, y equals to mx plus c, तो m क्या रहता है? Yes, slope. M is nothing but the slope. And what is c in this particular format? C is known as the intercept on y-axis. Y-axis वाला उसका जो intercept होता है, suppose कि this is a line and both this axis, x-axis, y-axis, ये x-axis है, ये y-axis है, this is a line, तो उसका जो भी slope आ रहा है, जो भी उसका slope है, that particular slope, वो slope होता क्या है? That is actually dy by dx, हमको पता है. Is it? We are just taking the deviation with respect to x, nothing else. So ये slope की बात हुई, पर ये जो distance है ना, that is known as a intercept. वो y-axis वाला intercept है, that is nothing but the c. Is it? So we all are comfortable with the slope. कि slope क्या होता है? Line का. Is it? So the similar kind of term will be there, because what we are going to do, we are going to identify one of the straight line, तो उसका कुछ slope रहेगा. We are going to identify two different lines. One of the line will be x on y, second line will be y on x. I'm talking about regression lines only. So if we are talking about a line, if we are discussing a line, then surely that particular line will have one sum of the slope, and that slope will be both the regression coefficient. ये जो मैं लिख रहा हूँ bx पिछले step में जो मैंने लिखा था. Now what both that are the regression coefficients, as well as both that are the slopes of that line. So how to identify that slope? उसकी फॉर्मूला क्या है? वो मैं अभी आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. देखिए, let me erase this particular all the ink. Someone, Pranjul Mishra. Pranjul, are you there? Pranjul, are you there? Pranjul, 2 or 3 students just left meeting. Why? Is there any connect? मैं ठीक से सुनाई दे रहा हूँ सभी को? Am I properly audible? Yes or no? Yes sir. मेरी तरफ से कोई इशू है? Sir? हाँ Pranjul, you just joined this meeting from some of the other. Internet issue, I don't know. मेरी ID से join ही नहीं हो रहा है sir. Lecture. I had joined with my personal ID. Yes. वो मुझे notification मिला, फिर मैंने accept किया. तेरा पर्सनल आईडी था मेरे पास, तो मुझे पता है कि ये तेरा ही है, सो आई हैड एक्सेप्टेड. इट्स ओके. पर तू 2-3 बार चला गया, फिर वापस आए, चला गया, वापस आए. बी बेच में एक मैसेज डाल दे प्रांजुल कि भाई जो जितने भी लोग नहीं है अभी यहाँ पर, उसको यहाँ पे होना है तुरंत ही, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग रिग्रेशन लाइंस एंड श्योरली इस टॉपिक का एक फुल क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में, पक्की बात है. कम से कम एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दो, ये दिस इज फॉर श्योर. ये पक्की इंफॉर्मेशन है. आई एम गोना लीक द पेपर राइट नाउ. मैं यही कर रहा हूँ अभी, आपको बता दे रहा हूँ कि इस टॉपिक का एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का है, ये 110% श्योर है. ठीक है. सो जो भी नहीं है उसको बोल दे एक बार जल्दी से. तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बस एक मैसेज डाल दे उसको, खुद से वो आना चाहे तो आए, बाकी क्या कर सकते हैं.
चलिए, I was discussing regression lines. चलिए जल्दी से मैं बता दूं कि ये कैसे आ रहा है. चलिए, as we know that regression line x on y, तो उसका फॉर्मेट क्या है? कल हमने देखा था that will be x minus x bar equals to regression coefficient x on y. Now regression coefficient x on y will have the notation bxy into y minus y bar. This is for the regression line x on y. Now, if we wish to deal with the regression line y on x, अगर मैं y on x की बात कर रहा हूं, तो इसका फॉर्मेट, इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? That will be y minus y bar equals to b. Now, this is what regression coefficient. Now we are talking about y on x, regression line y on x. So इसका notation रहेगा byx into x minus x bar. Now, if you observe this particular properly, this formula properly, जो मैंने यहाँ पे ऊपर जो स्लाइड में लिखा हुआ है, if you observe this particular properly, तो क्या होगा? देखिए y bar it will be a constant number, उसकी कोई फिक्स वैल्यू रहेगी, जो भी हो, that depends on the y series. x bar, ये this particular x bar will be a constant number and byx will be a constant number. इसकी कोई भी वैल्यू हो, सपोज कि इसकी वैल्यू है, y bar की वैल्यू 1 है, bxy की वैल्यू 0.5 है और x माइनस x बार की वैल्यू 3 है, सपोज, जस्ट फॉर द assumption. तो क्या होगा? y minus 1 equals to 0.5x minus 1.5 into 3, it will be 1, sorry, 3 into 0.5 to 1.5, ये 1 सामने चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, so it will be minus 0 point something. But the final equation will be like that, y equals to 0.5x plus 0.5, sorry, minus 0.5, my mistake, will be minus because will be plus and this will be minus 0.5. If you observe this equation keenly, then observe here. जो अगर इसको आप कंपेयर करें, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो हमको पता है x का जो कोएफिशिएंट रहता है ना, उसको हम स्लोप बोलते हैं, इज इट? सो कंपेयर, ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 0.5, वही तो मैंने लिया था वो regression coefficient की वैल्यू 0.5, is it? So regression coefficient is actually the slope of that particular line, is it? That is what I want to share right now. So this is what I had mentioned over here about the regression coefficient and the slope. And just I wish all of you will denote this particular formula over your classwork. The regression coefficient b by x will have the formula r, standard deviation of x divided by standard deviation of y, and regression coefficient byx will have the formula r, standard deviation of y divided by standard deviation of x. Both these are very, very important, both these formulas. One of the formula is for regression coefficient x on y. This is regression coefficient x on y, and this is what regression coefficient y on x. X on y है, इसलिए इसका फॉर्मेट ऐसा है, इसका नोटेशन ऐसा है, x y. This is regression coefficient y on x. That is the reason it is yx. Okay. And one more thing, it is x on y. So न्यूमेटर में x है, डिनोमिनेटर में y है, क्योंकि x से स्टार्ट हो रहा है तो न्यूमेटर में x, डिनोमिनेटर में y. इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. It's just for your जैसे कि आपको याद रखना है, because we are not interested in the theoretical portion. We are gonna use this formula. So and when we are dealing with regression coefficient y on x, तो न्यूमेटर में y रहेगा, standard deviation of y, डिनोमिनेटर में x रहेगा. ठीक है? So I wish all of you will mention both these formulas over your lab book quickly. कहीं पे एक बार लिख लीजिए जल्दी से. I'm giving you 10 seconds. आपको लिखनी है ये दोनों फॉर्मूला, एक ये और ये जल्दी से. Because we guys are in need of this. Please do it right now. Then we will be discussing its properties quickly.
Okay, then. So let me take you, all of you, further. This. Give me 1 minute. Good. Yes. Expression for the regression coefficients. देखिए. And the regression coefficient, when we wish to deal with the regression, any of the regression line, as we know that we're going to address both the regression line x on y and y on x, as I just see, we will be in need of coefficient of correlation then. Is it? We will be in need of coefficient of correlation. So what is the formula for the coefficient of correlation? वो हमको पता है. This is जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है, this is nothing but the Carl Pearson's formula for the coefficient of correlation, how to identify the coefficient of correlation between two different data x and y. So this is the formula. स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला ये थी, जो भी हमने याद करके रखी हुई हमको पता है. स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. Now, what is bxy and byx? I'm gonna give you the comparatively one of the simplest formula for both the regression coefficients. As I said that regression coefficient is having a formula. Wait, yes. As I said that regression coefficient, if I'm dealing with regression coefficient bxy, तो उसकी formula क्या रहेगी? R standard deviation of x divided by standard deviation of y. Now, ये R की formula है हमारे पास क्या है? This is the formula for R. This is the formula for the standard deviation of x. This is the formula for the standard deviation of y. If I'm gonna replace these three formulas over here, इन तीनों formula को अगर मैं यहाँ पे replace करूँ, थोड़ा simplify करूँ, जो भी कैंसिल हो रहा है, जितने भी कॉमन है in the numerator denominator, all the common terms, if we're going to cancel out all the common terms, then this particular bxy will have the formula like this. Observe here. It will having a simple formula, summation x minus x bar into y minus y bar divided by summation of y minus y bar the square. ये रहेगी एक आसान सी फॉर्मूला for the regression coefficient x on y. That means bxy. And if we wish to simplify byx, regression coefficient byx, regression coefficient y on x, so numerator will be same once again. It will be summation x minus x bar y minus y bar divided by. यहाँ पे डिनोमिनेटर में y वाला टर्म था because we were discussing about bxy. अब we are discussing about byx, तो डिनोमिनेटर में x वाला टर्म होगा, वही टर्म होगा पर x वाला x minus x bar स्क्वायर. अब ये फॉर्मूला कहां से आई? ये कहीं से उठाई नहीं हुई है. This is just a simplified version of this three. इन तीनों को अगर मैं यहाँ या तो इस फॉर्मूला में या तो इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर दूं, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन y की सारी जो वैल्यूज है, सारी जो फॉर्मूला है, वो यहाँ पे रिप्लेस करूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, तो यही निकलेगा. आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए टाइम वेस्ट करना चाहिए. अगर एनी ऑफ यू इज विशिंग कि भाई चलिए सर बताइए एक बार ये कैसे आएगा, तो बता सकता हूँ, पर as I said that is theoretical portion, उसकी कोई जरूरत नहीं है. If you can remember both this, अगर आप ये दो फॉर्मूला याद रख सके, then it is perfect, then it is good. फिर भी अगर आपको लगता है कि सर we need to discuss that, then I'm here. Please let me know. Any of you, please unmute yourself and let me know quickly. Preet, are you there? Yes, are you there? Preet, yes. Meghna, Bharti, Nidhi, Vibhusha, Ivanshi, Pranjul, मोहम्मद. क्या डिस्कस देखना है बेटा कि ये फॉर्मूला कैसे आ रही है? मोहम्मद, अनम्यूट योरसेल्फ. गिरीश, आर यू देयर? सर लेकिन मैंने अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले ही ज्वाइन किया, नेट चला गया था सर. बोल रहे क्या? कौन? मोहम्मद बात कर रहा है ना? हाँ सर, मोहम्मद. जाने दे तू. भारती, आर वी गुड विद दिस? गुड. हाँ, भारती ने गुड. सो this will be both this. जो रिग्रेशन के लिए कुछ एडिशनल आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं ना, ये दो, ये याद रखना है, क्योंकि उसकी वो जो है क्या बोलते हैं उसको, लाइन की जो फॉर्मूला है वो तो बहुत ही आसान है, पर उसमें जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आ रहा है ना, उसकी फॉर्मूला विल बी नीड ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट फर्स्ट. अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट निकला तो भी हम लाइन को ट्रेस कर पाएंगे, उससे पहले नहीं.
ओके, सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अभी मैं दे दूंगा आपको कंपैरेटिवली साथ में। रुक जाइए, अब इसकी जरूरत नहीं है, फॉरगेट ऑल दैट, आई एम नॉट इन नीड ऑफ दैट, फॉरगेट। वो एक ही है जो याद रखना है। यस, नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू हैव। अब आई एम गोना इंक्लूड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन द मिड सेम 2 इवन, एंड देन ये जो पांच प्रॉपर्टी अभी इसमें पांच प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5, I'm damn sure minimum 2 or 3 questions will be from this particular. Minimum 2 or 3 short question, 2 or 3 MCQs will be from this 5 properties only. So this is very very important. और अगर मैं बात करूं, अगर 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 इस साल जो गेट की एग्जाम थी, GAT GAT, is it now? I think all of you are good with that particular word, GAT. GAT क्या आप सभी को पता है? Is it? It is a entrance examination for the masters. मास्टर्स में अगर आपको IIT NITs में मास्टर्स के लिए जाना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी होती है, दैट इज गेट। on the basis of that particular score you can secure your admission on one of the reputed institute all over India. Okay, so इस साल जो गेट की एग्जामिनेशन थी ना, उसमें इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अभी जो प्रॉपर्टी इस स्लाइड में जो भी 3-4 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चंस, one of the question for 2 marks and second question was for 1 marks. Surely अगर कोई भी बंदा ये रिग्रेशन की प्रॉपर्टी अगर सारी उसको याद होती तो ये 3 मार्क्स बहुत ही आसानी से सिक्योर कर पाता। So what I want to say that this is very very important. This is something कि जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है। So what is first property? Yes, the coefficient of correlation is geometric mean of the coefficient of regression. The coefficient of correlation is nothing but the geometric mean of coefficient of regression. दोनों जो regression coefficient है उसका अगर geometric mean में निकालो ना तो वो होगा coefficient of correlation. Now what we mean by geometric mean? How we were finding the geometric mean of 2 numbers. अगर कोई बोले आपको कि you are supposed to find a geometric mean of A and B, अब इसका geometric mean क्या होगा पता है किसको? फॉर्मूला याद है? This is a part from this is a topic from the 10th standard. Geometric mean किसी को याद है? Unmute yourself and talk to me. मोहम्मद आयुदा या तो फिर कोई भी एक, भारती, मैग्ना, किसी को याद है बेटा जियोमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते थे हम? यस सर, अंडर रूट ए बी। यस, अंडर रूट ऑफ ए एंड बी। कौन था यस बोल रहा था? कौन बात कर रहा था? हाँ यस। चल बेटा, दो पॉइंट है, 2 नंबर है ए और बी, इसका जियोमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है। चल तू बता, अगर 3 हो ए बी एंड सी तो उसका जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? sorry 1/3 ABC A into B into C, तीनों का product and the cube root of that, is it? If you're having 4 points, 4 numbers A, B, C, D, and if you wish to find its geometric mean, तो कैसे होगा? Then the geometric mean will be the 4th root of product of this A, B, C, D raised to 1/4, is it? So now, yes, based on that information, किसी को geometric mean याद नहीं था तो मैंने याद करवा दिया। अगर 2 ही नंबर है A and B, उसका geometric mean find करना है तो क्या है? That is 1/2, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB raised to 1/2. Now what is 1/2? 1/2 is actually the square root of, is it? So if you are having both the regression coefficient BXY and BYX, if you take its square root, that means if you try to find its geometric mean, then that will be literally equals to coefficient of correlation. This is the first information. This is the first property. याद रखना इसको। चलिए, let me take you towards the second one. If one of the regression coefficient is greater than 1, then other must be less than 1, or both regression coefficient are reciprocal of each other. Both regression coefficient are reciprocal of each other. इसको let me correct this particular. इसको भूल जाइए, ये अभी नहीं चाहिए मुझे। I just need both this only. If one of the regression coefficient is having a value greater than 1, then surely other will be less than 1. देखिए, BXY, BYX, both are our regression coefficient. If one of them is greater than 1, मान लीजिए शायद if assume that suppose BXY is greater than 1, is having a value greater than 1, जिसकी value है x से बड़ी है, then it will be surely we can say that the other regression coefficient will be less if it will have the value less than 1. अगर एक की वैल्यू x से बड़ी है तो दूसरे की x से कम ही है। पर
It is quite possible that both the regression coefficient may have value less than 1. दोनों regression coefficient की value less than 1. This is valid. This is totally valid. ऐसा हो सकता है. But क्या नहीं हो सकता? bxy, byx, दोनों regression coefficient. It is not possible that both the regression coefficient have the value greater than 1. This is not possible. So what are the possible cases? One of them, या तो one of them is having a value less than 1 and other must have value greater than 1, or both may have the value less than 1, but it is not possible that both the regression coefficient will have the value greater than 1. ये बात समझ में आ रही है सभी को? Am I clear with this? Am I clear with this? It is totally possible that one of the regression coefficient, अगर मैं बात करूं comparatively bxy, byx, तो क्या हो सकता है? ये दोनों less than 1 है, it is valid. एक less than 1 है, एक greater than 1 है, it is valid. ये greater than 1 हो जाए, ये less than 1 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, it is totally valid. But it is not possible both that have the value greater than 1. इन दोनों की वैल्यू एक से बड़ी ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है. Is it? As I said that one of the question, two of the question from the gate examination was that उसमें से एक question इस property से था. अगर किसी बंदे को ये प्रॉपर्टी अगर याद होती ना तो तुरंत ही अपना एक ऑप्शन कैंसिल कर देता कि भाई ये नहीं हो सकता, A is cancel, B is cancel, C is cancel, D is the only option कि जो सही हो सकता है. So this is very very important कि if one of the regression coefficient is having value greater than 1, then surely other will be less than 1. Am I clear with this? Am I clear with this? Reply, please reply. Good. Yes, sir. Good. Third one. We'll discuss about the geometric mean in the first property. Now, arithmetic mean. If I wish to identify the arithmetic mean of both the regression coefficient, in दोनों regression coefficient का अगर मैं arithmetic mean निकालूँ, arithmetic mean माने कि क्या होता है? इसको क्या होता है? What we mean by arithmetic mean? Arithmetic mean means a simple average, bxy, byx, addition of both that divided by 2. This is the arithmetic mean. If you try to identify the arithmetic mean of both this regression coefficient, then surely that value will be either equals to r or greater than r. इन दोनों का arithmetic mean या तो r होगा या तो r से बड़ा होगा. But it is not possible that the arithmetic mean of both this will less than r. ऐसा नहीं हो सकता, is it? So this is the third property. Quite simple, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है. You are supposed to remember this. Yes. Forget about the first line. ये mathematical word में लिखा है, आपको जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ जरूरत है इसी की last line. Regression coefficients are independent of change of origin, but not of the scale. Regression coefficients are independent from change of origin, but not from the scale. Now, we are interacted with this particular while I was delivering the concept related to coefficient of correlation. मैंने ये बताया था what we mean by change of origin and what we mean by change of scale. अगर x और y का पूरा जो data है, if I'm having a series for both the data as x and y, उन सारे data में से, इन सारे observation related to x, इन सभी में से मैं अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कोई एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या तो फिर कोई एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूँ, then what I'm doing, I'm actually changing its origin. I'm actually changing the origin of that data. Is it? Similarly, if I'm adding or subtracting one of the constant number from the y series, then I can say that I'm changing the origin of y data. So when I'm changing origin or I'm changing the scale of both that variables, the coefficient of correlation is totally independent from that. मैं scale change करूँ या तो फिर origin change करूँ, r के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. But the regression coefficients are not will be surely affected by change of scale. So वो scale से independent नहीं. अगर मैं इन सभी का scale change कर दूँ, इन सभी में कोई एक fixed number multiply कर. What we mean by change of scale? If I'm multiplying some of the number, if I'm multiplying the whole data with some of the number, or I'm dividing that whole the series by one of the constant number, then I'm changing the scale. तो scales अगर change करूँ तो फर्क पड़ेगा. Both the regression coefficient will be affected, but it will be not affected if I'm changing the origin. So it is free from change of origin, but it is not free from change of scale. ये भी याद रखना है, ये आपको
आपको ये आपको सिर्फ एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और ज्यादा इसके लिए हमारे सिलेबस में इसके लिए टॉपिक्स नहीं है, पर ये आपको याद तो रखना है। एंड फिफ्थ, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल हैव द सेम साइन, either both are positive or both are negative. It is not possible that one of the regression coefficient will have the positive sign and other will have negative sign. ये नहीं हो सकता। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy byx दोनों की साइन ऑलवेज सेम होगी, या तो दोनों एक साथ पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। अगर आप कहीं पे भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हो, bxy पॉजिटिव आया, byx नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस व्हाट, योर कैलकुलेशन इज परफेक्टली रॉन्ग। So both the regression coefficient will always same sign, या तो दोनों एक साथ पॉजिटिव होंगे या तो दोनों एक साथ नेगेटिव होंगे, ठीक है? तो ये भी याद रखना है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर दैट, जो भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की साइन है ना, वही साइन होगी आर की, वही साइन रहेगी आर की। देखिए ये जो मैंने यस फर्स्ट के ऊपर चले जाएंगे, यस देख अभी मैंने क्या बोला, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट in the fifth property bxy and byx both will have the same sign, या तो दोनों एक साथ पॉजिटिव होंगे या तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। It is not possible that one of them is positive and other is negative, ऐसा नहीं हो सकता। या तो both these are positive या तो both these are negative। अब if both these are positive, bxy is also positive, byx is also positive, if both these are having a value positive, then we will consider r as a positive, तो उस केस में r भी पॉजिटिव होगा। And if both these are the negative, bxy भी है negative, byx भी है negative, then we will consider r as a negative. But it will conflict with this little bit. ये आपके दिमाग में थोड़ा confusion कर सकता है, क्यों? Let me clear that. क्या कोई question आना चाहिए अभी आपके साथ, आपके दिमाग में? बताइए मुझे, फिर मैं डिस्कस करूं। मैंने बताया हुआ है कि what is r? R is nothing but the square root of bxy byx. In other words, we can say that r is a geometric mean of both the regression coefficients, is it? फिर मैंने ये भी बताया अभी आपको कि ये bxy byx माने कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो फिर दोनों नेगेटिव होंगे, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ये भी आपको पता है। फिर अभी मैं सिक्स प्रॉपर्टी ये ऐड कर रहा हूँ, सिक्स प्रॉपर्टी जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो ऐसी है कि जो भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की साइन होगी वही साइन होगी आर की। If both the regression coefficients are positive, then r will be positive. If both the regression coefficients are negative, then r will be negative. Now, ये लास्ट वाली इंफॉर्मेशन क्या कोई क्वेश्चन दे रही है आपके दिमाग में? Are you having any doubt? Then please feel free to ask with me. Feel free to discuss with me. जल्दी से बताइए। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या बात कर रहे हो? देखिए, अगर इफ बोथ बता भारती अनम्यूट कर बेटा, वो लिख मत। सर अगर bxy एंड byx दोनों नेगेटिव होंगे तो भी तो r पॉजिटिव ही होगा। देख ये सिमिलर क्वेश्चन आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम वन ऑफ यू। मेघना इज देयर, इज इट मेघना तू बात करिए, भारती नहीं है। कौन है, कौन बोला अभी? सर मेघना। देख मैं तेरी आवाज भी पहचानता हूँ। देख मेघना क्या बोल रही है, देख सही सच बात बोल रही है वो। सर आपने बोला कि बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव और उसका स्क्वायर रूट मैं निकालूंगा, इट्स ओके, आई एम सपोज्ड टू कंसीडर r एज अ पॉजिटिव। पर अगर दोनों नेगेटिव है तो भी तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर r आप नेगेटिव क्यों ले सकते हैं? क्यों नहीं होगा सर? बिकॉज सर अगर वो जब हम लोग उसको ग्राफ में प्लॉट करेगा तो लाइन डाउनवर्ड की तरफ टेंड करेगा, तो फिर तो कोएफिशिएंट तो नेगेटिव रहेगा ना। परफेक्ट, वो भी एक रीजन है, पर फिर एक बार और मैं बता रहा हूं। देख हियर फॉर r जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम ले रहे हैं ना, r के लिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बात हो रही है, कि अगर मैं बोल रहा हूं बेटा कि r व्हाट इज r, तुषार तू बात कर मुझसे, तुषार अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलिए सर। बेटा देख दो डेटा है, दो वेरिएबल है x और y, इज इट सपोज, एंड उसके लिए मैंने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया। सपोज क्या आई हैव कैलकुलेटेड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर टू डिफरेंट डेटास x एंड y एंड आई एम हैविंग अ वैल्यू पॉजिटिव 0.9। इसका मतलब क्या होगा बता मुझे, कि बोथ दिस डेटास आर, वो ग्राफ है ना, वो ग्राफ अप टेंड्स टू अपवर्ड जा रहा होगा ग्राफ, ठीक है, अपवर्ड्स जा रहा होगा, अपवर्ड्स जा रहा है ग्राफ, अपवर्ड्स जा रहा है। उसका मतलब क्या है, बोथ दिस वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली कनेक्टेड विद ईच अदर, इज इट ना?
the coefficient of correlation, the correlation is high degree of positive correlation. Yes or no? हाँ ना, high degree of positive correlation. So वो तूने high degree of positive correlation कैसे डिसाइड किया? आगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डिसाइड किया ना. अगर यहाँ पे मैं बस माइनस कर दूं, -0.9 है तो क्या होगा? वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, पर वो नीचे जा रहा होगा. डिक्लाइन हो रहा है ना, ग्राफ तो डिक्लाइन हो रहा है ना, स्लोप तो डिक्लाइन हो रहा है ना उसका. Yes. In negative, with the negative sign, we can say that we are having a negative correlation. मानी कि if one of the variable is moving in the upward direction, then surely second is moving in the downward direction. Both these are moving in the opposite direction. So positive negative से यही फर्क हो रहा है, यही हमको पता चल रहा है, whether both the variables are moving in the same direction or whether both the variables are moving in the opposite direction, is it? So here positive and negative is not actually mathematical. ये mathematical नहीं है. This is just for this both the signs are just. Sir, slope incline हो रहा है या decline हो रहा है, वो identify करने के लिए use करते हैं. थोड़ी yes, वो भी बोल रहा है. जैसे अगर r की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों both the variables are moving in the same direction. अगर r की वैल्यू नेगेटिव है then both the variables are moving in the opposite direction. So coefficient of correlation पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है हमको, ठीक है. So when we are dealing with the coefficient of correlation in this particular using this particular formula, तो वहां पे भी r की जो वैल्यू होगी ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हम किससे डिसाइड करेंगे? हम इन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट से ही डिफाइन करेंगे. अब इन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट से ही डिफाइन करेंगे तो तुषार तू जो बोल रहा है वो परफेक्ट है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो वो भी एक रीजन है, वो उस तरीके से भी एक्सप्लेन हो सकता है. बट एज ए स्टूडेंट व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है एज ए स्टूडेंट? आपको बस इतना याद रखना है कि अगर bxy byx इफ बोथ दिस आर पॉजिटिव, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो आपको r पॉजिटिव लेना है. आपको फिक्र नहीं करनी है कि भाई सपोज इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 0.64, तो 0.64 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो दैट विल बी पॉजिटिव 0.08 लाइक दैट. तो आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, वो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है. आपको बस यही देखना है कि भाई if both bxy byx both are positive then r will be positive, and if bxy and byx both are negative, ये दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो आप r भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है. So this is what you are supposed to remember. But what we had discussed that are the reasons behind that. कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने बस लिख दिया इसलिए ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है. We must have the information regarding to that. So I was trying to convey that. अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी किसी को भी डाउट है. Let me show all the properties over here. देख लीजिए एक बार. These are the 6 properties you are supposed to remember, जिसमें से फोर्थ में से मुझे सिर्फ ये लाइन ही चाहिए. Regression coefficients are independent of change of origin but not change of step. ये mathematical जो लिखा है मुझे नहीं चाहिए. Don't worry about that. But I'm giving you just 3 minutes. Kindly go through this 6 properties. ये याद रखनी है आपको. अगर चाहे आप तो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. But this is very very important. And I'm giving you one more information. Surely I'm gonna put 2 or 3 MCQs from this particular slide. मैं एग्जाम में कम से कम 3 MCQ इस स्लाइड में से ही रखूंगा. But it will be not word to word. Word to word नहीं होगा, कुछ और हो सकता है. But if you are good with this, then you will able to solve that 3-4 questions. Yashang. Yes, Pema Wangli, are you there? Unmute yourself, Pema. Unmute yourself. I got one of the question from your side that, sir, what if both the coefficient of correlation is 0? It will be not possible. It will not happen, better. Okay, sir. One of the coefficient will be surely greater than 0. Another will be less than 0. Oh, in other case, both will have the value less than 1. Okay. Okay, sir. Good. सर इक्वल भी तो नहीं होगा ना? नहीं होगा. Yashang, please repeat property 2 and 5 again. Yashang, are you there? Yashang? Yes, sir. Yashang? Yes, sir. 2 and 5. Yashang, let me clear the second property once again. Yashang? Yes, sir. Wait.
वी आर हैविंग जस्ट 5 minutes और वेट ये एक ही मिनट ना बेटा, इसके बाद मुझे लेना है लाइन ऑफ रिग्रेशन एंड एग्जांपल पे जाना है। रुक जा, 5 मिनट के लिए तेरी क्वेरी सॉल्व करता हूँ मैं। Screen, let me choose the black screen and let me pick the pen. Yashang, unmute yourself, okay? Be with me. Yashang, be Yes. with me. Yes. अगर तेरे बैकग्राउंड में नॉइस है बेटा, तू बंद कर दे, क्योंकि सभी को डिस्टर्ब होगा। मैं तुझे बोलूंगा कि तुझे कब म्यूट करना है। Yashang, the second property says that. What was the second property? याद है आपको? If one of the regression coefficient is less than 1, then surely, if one of the regression coefficient is greater than 1, then surely other will be less than 1. That's it. What regression lines सारी जो आज पूरा कल से आज तक जो भी हमने बात की वो जल्दी से एक बार कैटेगराइज कर ले, एक बार एक साथ डिस्कस कर ले। चल ये संग बता मुझे, रिग्रेशन लाइन यहाँ पे जो हम बात करेंगे दैट इज एक्स ऑन वाई, सारी प्रॉपर्टीज की भी बात हो रही है अभी एक साथ, और रिग्रेशन लाइंस की भी बात हो रही है। यहाँ पे वाई ऑन एक्स। चल ये संग अनम्यूट योरसेल्फ, बता मुझे रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई का फॉर्मेट क्या है? पहले कौन सा पहले बोलना। सर एक्स ऑन वाई में सर एक्स माइनस एक्स बार, बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। ठीक है चल, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर वाई ऑन एक्स? सर वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। परफेक्ट, गुड। अब यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है बेटा? व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ओवर हियर? दिस इज bxy, is it? bxy is the regression coefficient. Now for that we had prepared one of the formula, that is r standard deviation of x divided by standard deviation of y, और उसको सिंपलीफाई करके भी हमने याद किया है। वो क्या होगा? that will be summation x minus x bar into y minus y bar divided by summation of, डिनोमिनेटर में y है तो यहाँ पे y वाला टर्म रहेगा, y minus y bar the square. This is the formula for the regression coefficient bxy. Okay. So similarly here, the regression coefficient byx will have the formula r into standard deviation of y divided by standard deviation of x. अगर इसको सिंपलीफाई करें, if we're going to simplify this particular, then the format will be summation x minus x bar into y minus y bar divided by summation of x minus x bar the square. Is it? Now after this we were discussing with its about its property. Okay, what are the properties of regression coefficient? Now if you observe both these formulas, bxy and byx, then second property was about something about this. I was trying to convey that if one of the regression coefficients, suppose bxy is greater than 1, so if the value of bxy is greater than 1, then damn sure the second regression coefficient, that means byx, will have the value less than 1. इसके ऊपर मैं एक एमसीक्यू ऐसे डालूंगा बेटा, देख चल रिवील ही कर दूं तुझे। अभी मैं 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रिवील कर रहा हूं, सो ऑल ऑफ यू बी अलर्ट। હું પેપર ખોલું છું ત્યારે ગુજરાતીમાં કહું છું। ઓકે, if some of the bivariate data, if one of the regression coefficient bxy is having a value 1.25, then byx will have the value dash, चार ऑप्शन नीचे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 1.25, b 1.35, c 2.90 negative, and d none of this. बता मुझे क्या ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यशंक बता, ऑब्जर्व दिस। सर -2 सर, नन ऑफ दिस लग रहा है। क्यों लग रहा है बोल ना। देखिए नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्यों? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होगा। मैंने बोल के रखा है कि दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 ही होना चाहिए। लेस देन 1 वाला मैंने एक भी ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। सो दिस इज व्हाट द करेक्ट ऑप्शन इज, नन ऑफ दिस। Yes, this is the way I can, this is not the actual question, okay? But this is the way I can form so many different MCQs on this particular property. पर ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है यशंक, देख, अगर कोई एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट x से बड़ा है ना तो दूसरा x से कम ही होगा। पर ये हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है बेटा कि if bxy is less than 1,
तो BYX भी लेस देन 1 हो सकता है. It is possible. It is also possible कि यहाँ पे मैंने BXY X से बड़ा रखा था, पर अगर ये सब भी हो सकता है, BYX is greater than 1, then BXY is less than 1. It is totally possible. But क्या नहीं हो सकता? What is impossible? That is this, कि BXY and BYX both are having value greater than 1. It is literally impossible. ये हो ही नहीं सकता. This is impossible. ऐसा नहीं हो सकता. Is it? This is what the second property says. Are you with us? समझ में आ रहा है अभी आपको? सर किसी को है या ना? Yes, sir. Are we good? Yes. Okay. Okay. Any other doubt? Any other doubt? Nikita Kakkar, unmute yourself. Nikita Kakkar, unmute yourself. Nikita Kakkar. Nikita Kakkar, unmute yourself. Nikita Kakkar, unmute yourself. नहीं बात करेगी भाई. अरे निकिता बात कर ले. इवांशी आ रही है कि नहीं है? इवांशी is there? इवांशी जाला? Not there. Nikita is here. Good. So this is what we are supposed to discuss for this particular session. Now, from the very next session, जब भी हम दूसरी बार मिलेंगे कल या तो फिर परसों, we guys will be dealing with its property. Sorry, we are done with its property. We guys will be dealing with its example. कि ये सारी property अगर आपके पास है तो example के साथ काम करना बहुत ही आसान होगा. It will be very easy for you guys to deal with the example if all of you are clear with the properties. And if you are not having the property, then surely there will create lots of confusion for both the regression coefficient BXY, BYX के लिए काफी confusion हो सकता है if you guys are not clear with the properties. So hopefully all of you are good with the properties related to both the regression coefficient as well as the properties related to coefficient of correlation. And the very next session we guys will be dealing with its example. Okay, so let me okay. These are the 5-6 properties which we had discussed today. बहुत ही जरूरी है, अगर आपको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या तो फिर क्लिक कर लीजिए कुछ भी, because I'm gonna stop this I'm gonna end this session. जल्दी से आप एक बार, ये जरूरत नहीं है, रुक जाइए, जरूरत नहीं, because I had already shared the PPT with all of you. Is it ना? So this is the